Hello, my dear students. This video is made for the Gyanadoot program of Commissionerate of College Education, Government of Rajasthan. And this video is about Girish Karnad, the famous Indian dramatist Girish Karnad, who wrote in English as well as in Kannada. And he wrote dramas pertaining to the contemporary Indian life, but he took his stories from folklores and myths and history. So I'm going to give you an introduction to him. I'm going to talk about his biography and generally about his plays. So let's get started. Now, in order to understand the writings of any writer, it is important to know about the kind of childhood that he had or the kind of life that he led. So let's talk about the early years of Girish Karnad first. He was born on May 19, 1938 in Matheran, which was at that time in Bombay Presidency, and right now it is in Maharashtra. So he was born in an area where Marathi was spoken, and his complete name is Girish Raghunath Karnad, Raghunath being his father's name, and his mother's name was Krishna Bai, and his father was Dr. Raghunath Karnad. So um, it was very interesting. It is very interesting to know that his mother, she was a widow at the time when she met Dr. Raghunath Karnad, and it was a very big deal at that time in pre-independence India. It was a very big deal for a widow to get remarried. Dr. Raghunath Karnad married Krishna Bai, and Girish Karnad was the third child of this couple. And Girish Karnad, he spent initial years of his life in Sirsi, Karnataka. So he was born into an area where Marathi was spoken. Then he spent the initial years of life in Karnataka, where Kannada was the main language that was spoken. But in the school where he studied, the language of instruction was Marathi. So it is interesting to know that he knew Marathi and he knew Kannada and he was learning English at the same time. And he moved to Dharwad in Karnataka when he was 14 years of age. So he was traveling a lot with his family and he was learning new languages, he was gaining new experiences, which all would be reflected in the kind of writing that he wrote. And he graduated in mathematics and statistics. So again, it is interesting to note here that he academically he was interested in mathematics and statistics, but he chose theater as his profession, writing as his profession, and he was a Rhodes Scholar. He went to Magdalen College of Oxford University in London, and there he studied philosophy, economics, and politics. So we can see here that we have a person in making who had exposure to various languages, to Marathi, to Kannada, to English, and academically he has varied interest and he studies mathematics and statistics. At the same time, he studies philosophy, economics, and political science. And it is interesting to note that he was the president of the Oxford Union in the year 1962-63 while he was studying there. So I mean, it is interesting to note the kind of influences, the kind of experiences that he was gaining in his early life. Now, talking more about his early years, when he came back to India from Oxford, he worked for Oxford University Press, Madras, for 7 years. So he was in Oxford. His first play, Yayati, had come out. So he was interested in literature, he was interested in writing, and he was interested particularly in theatre. It was very clear to us. And he worked for Oxford University Press, and at the same time he joined the Madras Players. So the Madras Players is a theatre group that he had joined. So now he had decided that he has to devote his life to writing.
drama, writing plays. Now it is very interesting to note, initially Girish Karnad एक पोएट बनना चाहते थे, वो कविताएं लिखना चाहते थे, एंड देन ही ended up writing plays and writing plays on history and mythology. तो उन्होंने खुद ने कहा है कि उनके लिए भी ये कोई कम आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि वो पोएट बनना चाहते थे और ड्रामेटिस्ट बन गए. और पोइट्री एंड ड्रामा, दे आर टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. पोइट्री में राइटर एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी वो अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं. राइटर ऑडियंस तक, रीडर्स तक सीधा पहुंचाते हैं. ड्रामा में वो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू बात करते हैं जो राइटर हैं. तो दोनों थोड़ा अलग तरीके के आर्ट फॉर्म्स हैं. और पोइट्री को पोइटिक ईडियम में लिखा जाता है, पोइटिक लैंग्वेज में. ड्रामा यूजुअली प्रोज में लिखा जाता है. तो एक पोएट बनते बनते वो ड्रामेटिस्ट बन गए. इसके पीछे भी कुछ इन्फ्लुएंसेस थे उनकी लाइफ के, रहे होंगे, जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में. सो he wanted to be a poet, he became a dramatist, he joined the Madras Players, and he was a multifaceted personality. So he was a writer. We are talking about him in the capacity of a writer. He wrote dramas, he wrote in English, he wrote in Kannada, and he was an actor. So actor, he worked in Kannada films, he worked in Hindi films. At the same time, he worked in television series. So he was, as an actor, he had a very varied kind of experience in his life. And for television, the famous TV series that he worked in, was one of them was Malgudi Days, which was based on R.K. Narayan's stories about Swami and his friends. And then he worked in, he presented a science magazine every Sunday which was called The Turning Point. And then he worked in Hindi films like Utsav and Swami, and he worked in for the younger students, जो नए बच्चे हैं, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा रिलेट करेंगे. एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है से, इन फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया है. सो बहुत अच्छे बेहतरीन एक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, उन्होंने स्क्रीन प्लेस लिखे और उनको अवार्ड्स भी मिले स्क्रीन प्लेस के लिए. और वो डायरेक्टर थे, ना सिर्फ वो फिल्म डायरेक्टर थे बल्कि उन्होंने ड्रामास भी डायरेक्ट किए, और वो प्रोड्यूसर भी थे और थिएटर डायरेक्टर थे, जैसा मैंने अभी बताया. सो ही वॉज अ मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी. बहुत सारे टैलेंट्स थे उनके पास, और वो सारे टैलेंट्स की वजह से हम उन्हें याद करते हैं. और बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारा रिकग्निशन उनको इन्हीं टैलेंट्स की वजह से मिला. तो जब हम उनके अवार्ड्स और रिकग्निशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस थी जो उन्होंने होल्ड की लाइफ में. वो FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन रहे, नेहरू सेंटर इन लंदन उसके डायरेक्टर रहे. और अवार्ड्स की बात करें तो राज्योत्सव अवार्ड मिला उनको कर्नाटका गवर्नमेंट से, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण विच इज़ द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उन्हें मिला साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में इंडिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके बाद कालिदास सम्मान, और उनकी फिल्म्स के लिए उन्हें अलग अलग कैपेसिटी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स उन्होंने जीते. तो हम देख सकते हैं कि कितने मल्टीफेसेटेड पर्सन थे गिरीश कर्नाड. अब हम बात करते हैं मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन गिरीश कर्नाड एज अ राइटर. सो कई तरह के इन्फ्लुएंसेस रहे. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एज अ यंग बॉय ही ट्रैवल्ड विद हिज फैमिली, he knew Marathi, he learned Kannada, he learned English, so he was a multilingual person.
एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ा प्रभाव था, जब हम एज अ ड्रामेटिस्ट उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो उनके ऊपर पड़ा नाटक कंपनीज का। नाउ नाटक कंपनीज, वी आर टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, हम आज़ादी से पहले के भारत की बात कर रहे हैं, जब गिरीश कर्नाड, ही वॉज अ बॉय, ही वॉज अ यंग पर्सन। सो दीज नाटक कंपनीज वर टूरिंग नाटक कंपनीज, ये एक शहर से दूसरे शहर में जाके नाटक दिखाते थे, और इन नाटकों को गिरीश कर्नाड वुड गो एंड वॉच विद हिज पेरेंट्स। सो ये जो नाटक कंपनीज के नाटक थे, ये नाटक प्रभावित थे पारसी थिएटर से। नौ पारसी थिएटर उस तरीके का थिएटर है जिसमें स्टेज बहुत भव्य होता था, बहुत ग्रैंड कॉस्ट्यूम्स, ग्रेट स्टेज प्रॉपर्टी, गुड लाइटिंग, हेवी मेकअप, और बहुत सारी नाटकीयता होती थी इन नाटकों में। सो नाटक कंपनीज के नाटक पारसी थिएटर से प्रभावित थे। तो थोड़े फॉर्मल तरीके के नाटक थे। दूसरा प्रभाव जो गिरीश कर्नाड पे था, यक्षगणा। यक्षगणा excuse me, yakshagana performances, which were, they were based more on फोक थिएटर। तो यक्षगणा परफॉर्मेंसेस में स्टेज बहुत सिंपल होता था, एक कैनपी होती थी, टॉर्च लाइट में नाटक होते थे। और नाटक कंपनीज के नाटक वो प्रॉपर लाइट्स की, पेट्रोमैक्स या दूसरी अच्छी लाइट्स की रोशनी में होते थे, और ज़्यादा भव्य, ज़्यादा फॉर्मल नाटक थे। यक्षगणा प्लेज, दे वर मोर इनटू द फोक थिएट्रिकल ट्रेडिशन। तो ये दोनों ही तरह के प्लेज गिरीश कर्नाड ने बहुत देखे, अपने पेरेंट्स के साथ देखे, अकेले देखे, और इन प्लेज की बहुत सारी बातों को उन्होंने बाद में अपने प्लेज में अडॉप्ट किया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फोक थिएटर, जैसे फॉर एग्जांपल हम तुगलक उनका प्ले पढ़ते हैं, सो द कैरेक्टर्स ऑफ अजीज एंड आजम, दे आर based on the Akar and Makar, these two comic characters of Kannada folk theatrical tradition। तो इस तरह के कई सारे ट्रेडिशंस जो उन्होंने बचपन में नाटक देखे थे वहाँ से उन्होंने बोरो किए, और एंड ही यूज्ड देम, ही अडेप्टेड देम इनटू हिज प्लेज। उसके साथ में मॉडर्न वेस्टर्न थिएटर जो था, उसका उन पे प्रभाव था। ही वेंट टू लंडन, सो ही वॉज aware of the kind of drama that was being written there, that was being staged there. So the theatrical tradition of England at that time, at the same time the, I mean, जो थिएटर का क्राफ्ट था उस समय पे इंग्लैंड में, वो ही वॉज अवेयर ऑफ दैट। साथ ही साथ में जिस तरह के नाटक लिखे जा रहे थे, ही वॉज अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो, and he was aware of the fact that he could not directly imitate those western practices into for Indian audience। वो वेस्टर्न तरीके के ड्रामा को इंडियन राइटर्स के लिए वैसा का वैसा नहीं ला सकते थे। सो ही एक्सपेरिमेंटेड, ही यूज्ड ऑल दोज मेमोरीज दैट ही हैड from natak companies and from yakshagana plays, and he used those experiences into his own plays। तो ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस रहे वेस्टर्न थिएटर में। बर्टोल्ट ब्रेस्ट से वो प्रभावित थे बहुत ज़्यादा, और उनका ये मानना था कि प्ले को नॉन नेचुरलिस्टिक तरीके से दिखाया जाना चाहिए। मतलब वो बिल्कुल जो जैसा है वैसा नहीं उन्होंने दिखाया, उन्होंने हमेशा मिथ्स का यूज़ किया, हिस्ट्री का यूज़ किया। तो एक इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने अपनी बात कही हमेशा। ना उनके मेजर वर्क्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्ले उनका ययाति, जब वो मात्र 23 साल के थे उस समय उनका प्ले आया इन 1961। ही वॉज अ स्टूडेंट, he was studying at that time, and Karnad himself he admits this, that he was shocked, he was surprised to realize that he had written a play based on a myth. So Yayati is a character in Mahabharata, and he borrows that character from there, and he writes a contemporary play on that story. So he talks about Yayati, he talks about his wives and his sons in the play, but
there is something very contemporary about this play. It talks about responsibility, and this theme of responsibility, it never goes out of fashion. It is universal, it is always there. So he wrote a play on a character from Mahabharata in the 20th century, and he says that I felt as if someone was dictating the whole play to me in my ears. I mean, it was written in some moments of intense inspiration. Now, his reputation rests on Tughlaq, which came out in 1964. I mean, this was the play that established him as a writer, as a playwright. And Tughlaq was about Muhammad bin Tughlaq, about a ruler from 14th century, and he talked about Tughlaq, but with a contemporary reference, with a contemporary twist. Then came Hayavadana, which is based on the myth of the transposed heads. एक ऐसी कहानी हमारे पुराणों में से जहाँ पे दो लोगों के सर बदल जाते हैं, तो शरीर उनका अलग तरीके का है और सोच अलग तरीके की हो जाती है. So he talks about that. Then Hitina Hunja, which is called Bali, came out in 1980. Then Nagamandala, again, which is based on a folklore. Then Tale Danda or Rakta Kalyan. Then Fire and Rain, The Dreams of Tipu Sultan, and then A Heap of Broken Images, which came out in 2006, Wedding Album in 2009, and Flowers in 2012. So these are the major works by Tipu Sultan. But if we have to study him as a writer, then we can rearrange these works according to the themes that they treat. And uh, we can talk about his plays in terms of his themes. So there are certain plays which are based on myths. Now, see, Girish Karnad was very clear about one thing. जैसे हम शेक्सपियर के लिए बोलते हैं कि शेक्सपियर की कहानियां उनकी अपनी नहीं थी, ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोरो किया, उन्होंने हिस्ट्री से बोरो किया, उन्होंने पुराने राइटर्स की स्टोरीज को लिया, उन्हें री इन्वेंट किया. ही रीपैकेज्ड देम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ हिज ऑडियंस और अपने प्लेज लिखे. द सेम वे कर्नाड कन्फेस्ड दैट ही कुड नॉट इन्वेंट न्यू स्टोरीज एवरी टाइम. वो हर बार नई कहानियां नहीं सोच पाते, तो उन्होंने हिस्ट्री और मिथ्स का सहारा लिया. सो उनके ये जो प्लेज हैं, ययाति, बलि और फायर एंड रेन, दे आर बेस्ड ऑन मिथ्स. He takes characters from mythology and he gives them a contemporary twist. He presents these characters, the dilemmas of these characters uh, for the contemporary audience. And he believed that the Indian audience, they were not prepared at that time for a very upfront kind of presentation of the socio-cultural challenges that they were facing, or the kind of dilemmas that they had in their lives. So he thought of this way, and he talked about these things in a roundabout manner, and he borrowed stories from history. So he has plays which are based on history, Tughlaq, then Taledanda, and the Dreams of Tipu Sultan. These are the plays which are based on history, historical characters. So he takes these characters and he gives them a contemporary twist. For example, Tughlaq, uh, one of the most famous plays that he wrote, and it talks about a 14th century emperor. And Girish Karnad, he took it upon himself as a challenge to write a historical play in Kannada. Uh, and he read many history books, he read many textbooks of school students, and then he came upon the story of Tughlaq, and he found it so contemporary. I mean, the play came out in 1964, and there could not have been a better time to talk about Nehruvian era, to talk about the disillusionment that people were facing, and to talk about uh, the expectations that people had and the reality that they ultimately had, and the great talent of the ruler.
Tughlaq and Nehru. So he took that story from history, but he himself confessed, उन्होंने खुद ने बोला ये बात कि जब उन्होंने तुगलक के बारे में पढ़ा तो उन्हें तुरंत ये स्ट्राइक किया कि ये स्टोरी बहुत कंटेम्प्रेरी है, क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की एक्सपेक्टेशंस और उनके डिसइल्यूजनमेंट को बहुत अच्छे से दर्शाती है। इसके बाद में उनके प्लेस बेस्ड हैं फोकलोर्स पे। सो हयावदना, जैसे मैंने भी बताया, द ट्रांसपोज्ड हेड्स, नागमंडला, it talk again, I mean these two plays, Hayavadana and Nagmandala, so that they talk about gender, they talk about choice, they talk about women. So वो ये सारी थीम्स, ये सारी जो स्टोरीज हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी हों, लेकिन उनकी जो थीम्स हैं, जो डिलेमाज हैं, वो यूनिवर्सल हैं और वो कंटेम्प्रेरी भी हैं। एंड कर्नाड कुड सेंस that element of contemporaneity in these stories, and he could use these stories to connect with his audiences. और उनके कुछ plays which came out in 21st century, A Heap of Broken Images, Wedding Album, they are written in English and they talk about contemporary life. So it is interesting to note here that he, while he was writing in the decades of 1960s and 70s and 80s, he made use of myths and folklore and history to convey, to talk about the complexities of contemporary life. But when he comes to 21st century, he uses the language, he uses the idiom, the expression of modern people to talk about modern life, the contemporary life. So maybe because maybe he realized that the Indian audience, they he knew this fact, वो ये जानते थे कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में लिखा जा रहा है जो थिएटर, उस तरीके का थिएटर इंडिया में काम नहीं करेगा। तो उन्होंने हिस्ट्री और मिथ्स और फोकलोर्स को यूज़ किया कंटेम्प्रेरी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए। वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, वो राउंड अबाउट वे में बात कर रहे हैं, बट द मैसेज इज कन्वेड टू द ऑडियंस। बट मे बी व्हेन आई मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारा चेंज आया सोसाइटी में, और 21st सेंचुरी तक आते आते the audience maybe, I mean this is my interpretation, that the taste of the audience has changed and they have become more mature. So maybe they are willing to talk about their complexity, the complexities of their lives directly in an upfront manner. So Karnad could write plays on the contemporary life, in the contemporary idiom, in the contemporary language, not relying on history or not relying on folklore or myth. So this is how we can categorize his plays and this is how we can understand his plays. बहुत सारा कुछ है उनके प्लेज में बात करने के लिए, तो आगे आने वाले वीडियोस में और बात करेंगे गिरीश कर्नाड के बारे में। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।